On behalf of the Faculty of Engineering and Technology and Internal Quality Assurance Cell, I, Aruna Bansal, extend a very warm welcome to all the respected university officers to this one-day hands-on training program on administrative efficiency through AI. We are indeed privileged to have with us today an eminent academician and administrator, again in one of the many roles, Dr. Manoj Kapil, Dean, Faculty of Engineering and Technology, as a resource person for this training program. Sir's rich experience in engineering education, emerging technologies, and academic administration makes him an ideal guide for this session. So on the outset of this event, I welcome Honorable Vice Chancellor, sir, the esteemed guest, and my fellow colleagues who are present over here. This is really a motivation of our CEO ma'am, along with the EO sir, that this type of training program, that is the training for the trainers, should be organized in this premises, because all in these years what we see that the advancement of AI has pushed some of the factors into the direction that everyone has to learn this. It is now required for every officer, start from the top management to the lower management as well, to learn these techniques. And it would be like if you are not learning or you are not into the AI system, then in the coming couple of years, you will be treated as an illiterate. Though you are well educated, but this is the education of the hour, this is the education of the future trends, and you have to grab these things. So if you are using the digital system, transforming from the manual system to the digital system, it says that, researchers has been done on this, it says that 20% of your time is being saved. So 20% if you are using the digital systems. If you are using the ERP systems means that those you are using right now in our university. There are student ERP, there are several other ERPs prevailing in our university. So those ERP then again further enhance the automation, and it comes from the manual to the ERP system, it comes to the 40%. And when it comes to the AI, have you ever thought of it that with the advent of AI, when we are using the AI in the offices, definitely from the manual to the AI, the 60% of time saving is there. Means if for 10 days, you are able to save 6 days with the help of AI. So today, before starting, you should know that what is an AI. AI is, it's really, for you people, I can say that it mimics the human intelligence. Okay, it behaves like that. It is equal to the human intelligence with the help of algorithms that we people in the BTech, we develop the algorithms for the AI and all. So with the help of a simple example, I would like to make you understand that how AI works. Suppose on a car there are two buttons. One is a training button and one is a auto button. Okay. Now I want that my car should be auto driven. So I'll take my car, I'll push the training button, and I'll drive the 1,000 of miles with that training button on. Okay. So when the training button is on, my car will learn where I'm driving where I'm steering the bumps on the roads, the pit holes, the speed breakers, the red light. So the car will, along with me, the car will observe all those scenarios. So that's the learning phase. And after 1,000 of miles, when after I press the auto button, then the learning that car has done
from the learning phase, it will drive automatically. So this is artificial intelligence. Means for artificial intelligence, a training module is always required. And these days, those training modules are supplemented with the help of machine learning. Okay, so you might have heard about the machine learning. So machine learning is a system which train the modules, the algorithms, so that they can run by their own, by their automations. So because I don't have to waste much more time in the definitions and all, and I have to start for what you people are over here. So artificial intelligence means a computer system that can understand, think, and assist like a human being to some extent. AI does not just store information, but it can read, analyze, summarize, and generate responses based on what you ask. So this was the prior state when the digitization in the offices were there, and this is the comparative table if you use the AI in the offices. So it was a simple comparison. Digitization in the offices store data, but it understands the data, follows fixed steps, learn from the context, need human efforts at every step, assist human intelligently, converts paper to computer, converts effort into efficiencies. So what AI can do for officers? Yes, it can draft emails and notes. So probably 90%, 99% of you are doing this. Summarize circulars, prepare reports, assist planning, record meetings and MOM. So this you all are doing with the help of LLM. LLM is large language model. So large language model are the models in which everything can be done. Means all the AI models are incorporated in this single model. Okay. So here we can see over here, there are 4 models over here: ChatGPT, Google Gemini, Perplexity AI, Microsoft Copilot. So how many of you have done use ChatGPT? Please raise your hands. Okay, Google Gemini, Perplexity, okay, and Microsoft Copilot. So I'll show you the different dimensions of Microsoft Copilot and Perplexity. So this is the basic difference between all of them. Here you can see the ChatGPT is used for the creativity type of work in which creation is required. Okay, wherein Google Gemini is used in the Google environment. So with the help of Google Gemini, we can customize all our office automation which are in the Google Drives, Google Docs, Gmail. So we can all use in that. Perplexity, yeah, this is the this I endorse every time, and with the embracement of the AI, and when it was launched, I have kept the Google aside. I'm always using the Perplexity AI, because Perplexity AI is always using the database, the real life database from the Google or from some of the web crawlers. So everything, for example, if you want to know about the current status of the stock index, so in that scenario, ChatGPT might be a little bit slower or may not be give you the sufficient result, but in this Perplexity, it is a real-time solution. So AI with Google, you can say. Okay, Gemini is also that kind, but it always give you citations, references, this Perplexity. So if you are doing a research work, so Perplexity is required, because it always give you a genuine citations, genuine references from where it is crawling the information. It is not happening with the ChatGPT. ChatGPT sometimes give you a fake information. It happens. Microsoft Copilot, it is embedded within the environment of Microsoft, and we'll see that. So what AI cannot do? So AI is for our assistants. Okay. So take administrative decision? No.
AI is not meant for that. Replace human judgment? No. Because sometime you know that this thing is right, but with the characteristic features, it seems to be correct. But that is not correct. So it happens. So there are few free AI tools for office automations. I'll share this PPT with you. You can have a glimpse of that later on. So now we'll do some of the live demonstrations. So without wasting time, I have created some of the prompts for you so that those who have not started yet in the chat GPT also, so they can see that how the AI is working. So chat GPT for official email drafting, yes. Say for example, draft a formal email from the registrar to all the deans regarding submission of semester progress report with a polite tone and clear deadline. So Control C, I'll just paste it over here so that your time would be saved. So it will create a formal email. We just have to give a prompt. So this is all what you people are doing these days. Everybody's English is up to the mark or excellent. Hindi is also excellent because with the help of chat GPT. So this is all what written with the single prompt. Everything is written over here. So we just have to mention the deadlines, and here it goes. So simple circulars, yes, it is like that only. The same way, prepare an official circular announcing revised office timings as per government guidelines suitable for university circulation. Yes, it can go. So everything is being written over here, nothing is left. Just copy and paste to the desired inbox, to the desired compose area by the order of the registrar. Reminder communications, policy drafting. Okay, sometime suppose, so this is the same way, the reminder communication, the policy draft, draft a firm yet courteous reminders emails to department that have not submitted NAAC data despite 2 previous reminders for IQAC director. Policy drafting, draft a university policy on the ethical use of AI tools in the administrative and academic. So it will draft a whole policy by itself. No, this you all people know, but for those who don't know, I am pasting it over here, and it will make a policy by itself. Crawling all the government websites and all. With the examples. So what you have to provide this chat GPT? Simple a prompt in your own language. In your own language, no? It's not specific that it is pre-customized, no. So that is the beauty of the LLMs, that they can understand what you say. So this is for file upload. Say for example, I have a file, so it can accept all the files, okay, almost all the files. Here I am attaching research promotion policy. So I am attaching the file research promotion policy, and I have a question regarding the research promotion policy. So I'll paste it over there. And my question is, refer the attachment that I have done right now and state the incentive applicable to the first author for a Scopus indexed journal publications, including amount,
condition, and author-wise distribution. So I have attached the research promotion policy, and I have given this prompt, refer to the attachment and state the incentive applicable to the first author for a Scopus Index journal, including amount, condition, and author, because now it will crawl all the information from this attachment. We'll see it over there. So this is our policy. So information is being crawled from the policy of 2024. So you can type any of the question, you can attach the file, you can type any of the question, and definitely will receive the answer if it's there in the policy. So here we go. So now sometime it happens that you are quite busy and you want that your office superintendent or other clerks should draft an email for you because you are busy over there. So you can train them, or we can organize some of the these type of training for the office superintendent and the clerks as well in the coming days. So it is very simple, and this is a website name as speech co.in. You can just simply type from the Google speech co, and you will find it over here. So all what you need is, this is the first link over here, and here you can see environment. So here are many languages in which you can speak, and along with your voice it can write the context over there. Say for example, now you have given the instruction to the your office superintendent that he has to कुल सचिव महोदय को संबोधित एक ईमेल लिखें जिसमें विश्वविद्यालय में एआई विषय पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों के लिए चाय एवं समोसे की व्यवस्था हेतु अनुमति का विनम्र अनुरोध किया गया हो। इस ईमेल को इंग्लिश में लिखा जाए। जहां पे छोटे मोटे एरर हैं उसको आप वो कर सकते एआई ये So copy it from here and just paste it over here, and it will write a email. So sir, this is for you, sir. So this is all about, means in your offices you can give a merely a 200 rupees mic to the clerk over there, sitting over there, and the whole day he can draft the emails with the help of the voice. So a lot of time is being saved. Otherwise high frequency intensity typist is required over there, and again you are asking for the corrections. So it will not do any type of mistake over here. So it can receive the instructions in any of the languages, no? For suppose there is a certain type of MOU you require from the French university, so it can write in the French as well, the email in the French. Now I am coming to the perplexity. This is again the LLM. So what it does, as I have already stated, that it crawls the information
from the live data, like a Google. Okay, certain crawlers are there, Google, Yahoo, and many more you might have heard. So it can fetch the information from there. So for the rule interpretation, like I want with the citations and the references, explain AICTE norms for regarding faculty counts and lab requirement in simple administrative language for senior management. So perplexity. So it will scroll all the websites, the links, and it will always provide you the exact real data from the databases. So you can see over here from where it has crawled this, no? So citations are here. So every information is here. Yes, you can ask for the fact-checked queries from it. So many fact-check these days are being accomplished with the help of perplexities, but this is the simplest. What are the latest AICTE inspection requirement related to the laboratories and faculty space? Provide sources. So here we go. So all the information is scrolled. Now the good feature of it is that it is used for the voice communications. No? So, hello there. What can I help you with today? So how has office work changed from manual to computer, ERP, and AI systems? Office work has evolved tremendously, shifting from manual paperwork to computer-based systems, and now to advanced ERP and AI-driven platforms. These systems streamline operations, automate tasks, and enhance productivity with data-driven insights and smart decision-making. So what problem did we face during each change? Each shift brought its own challenges. Moving from manual to computers, people faced training gaps and resistance to new technology. With ERP systems, integration complexities and data migration were key hurdles. Now, with AI, challenges include trust, ethical use, and adapting to rapid innovation. So how did teamwork and data management improve with these systems? Teamwork improved with real-time collaboration tools, shared access to data, and better communication across teams. Data management became more streamlined, with centralized databases, automated reporting, and enhanced analytics for faster decision-making and better collaboration. So what benefit we have seen after using AI in our office works? What benefit? Okay. So this is how it works, no? So I daily drive for 1 hour. So within that 1 hour, this perplexity is always on my Bluetooth with my car speakers, no? So every time I require some of the information, I can ask. It provides the information. Now, the another tool is otter.ai. You can see it over here, otter.ai. How many of you have used this tool? जो मैं बता रहा हूँ अब तक तो सब फ्री है वो. So you can see this, that I am using this tool from 2022 and it's a tremendous tool. The benefit of this tool is you download an app in your mobile, start the app when you are into the meeting. So so many people are there in the meeting, it will record all the voices and make the MOM of that. Okay, so no PA is required over there, sir. If a meeting is going on, it simply record the voices and it will create a MOM with the help of the AI, and that's too with a very polished language. With हाँ वो आप दे सकते हो, वॉइस के साथ में उसको आप वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. एक बार आपने डाल दिया, फिर अगली बार से पहचानेगा कि ये वॉइस किसकी है, आपकी तो पहचान ही लेगा वो. Along with this,
along with this you can paste the URL over here. यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी मीटिंग का लिंक होगा, वो लिंक आप यहाँ पेस्ट करेंगे. जूम मीटिंग, गूगल मीट, कोई भी मीटिंग होगी वो आप पेस्ट कर देंगे. यहाँ पे पेस्ट करेंगे, जब मीटिंग स्टार्ट होगी, so it will ask from the moderator over there. If the moderator allows, then order is in and it will create a voice recording along with the MON and transcriptions and all. So this is helpful over there. And you can ask anything from that. No, here's the prompt. Now your meeting has been recorded. So meeting has been transcribed. Now you can have any query with that MOM, with that meeting. Okay, if any of the point you are skipping and you don't want to listen the whole conversation, just give the prompt and it will crawl all those information from the meeting MOM and it will provide to you. Okay, right? If you ask that if there was some discussion regarding the winter leave in the meeting, so it will provide you the information. Yes, gentleman number 2 or this person, if you have labeled the person, has spoken about this and it has been approved. Okay, so this is a great tool. You should use this. And 300 monthly minutes are free for everyone. 300 minutes per month is free for everyone. So what it can do? Converts, these are the prompts, convert these discussion point into formal minutes of meeting with action items. So decision summary for leadership, summarize the 2 hours meeting discussion into a 1-page brief for the CEO highlighting the key discussions. So it can be done. So okay, now I'm switching to some more advanced feature of the applications. Now I'll show you the Office 365, Microsoft Word. Like this is the Microsoft Word. It can also records the dictations like we have earlier done in the speech.co. So कुल सचिव जी को एक एप्लीकेशन लिखी जाए जिसमें उनसे AI ट्रेनिंग के दौरान चाय एवं समोसे का इंतजाम करने के लिए प्रार्थना की जाए. मतलब दिस इज ऑल वर्ड, मीन्स दिस इज द वर्ड वेर यू कैन स्पीक एंड इट विल राइट बाय इटसेल्फ. नाउ दिस इज द न्यू वर्ड, न्यू ऑफिस. Okay, so no requirement of the fast typist, and if he's or she's on the leave, then you can utter the sentences over here and it will write it by itself. So along with that, we have a co-pilot inbuilt. Okay, suppose you have a draft, you have a Word document of say for example 100 pages. Sir, this is a simple button, sir, on the top. Dictate. The same or here? No, sir. This is Microsoft Word. MS Word. Yes, sir. Office 365. That has to be downloaded in our system first. Then we can directly. Yes, sir. If we are not having the license of this, then speech.co is there. That is there. So here, yes, sir. So this is for. Most of the offices they do this. So they use different tools, no, sir. So it is inbuilt here itself. Yes, sir. So it's simply a dictate button over here, and while clicking on the dictate, you have to start speaking, and it will. Now it is there. Now Yes, sir. Now it is simply a prompt.
you can see I have inserted certain anomalies over here. It is not relevant, but still I am copying it. Then the Copilot button is there over there on the rightmost. Click on it. Just type it over here and it has written all application in the MS Word. So simply now after enter, just click on this plus button on the rightmost and it will insert the whole context. So it is there in the word itself. Okay, same wise, now I'm going to say, for example, now this is for creating a slide. No, so we can create this in any of the application. Say, for example, this is Chat GPT. I'm copying this in the Chat GPT. So create a 6-slide presentation for senior management on how AI can reduce administrative workload in the university system. Provide the PPT for download. So I'm just clicking on this. So here we go. Just click on this. And it will ask you to where to download it. And suppose I have AI admin efficiency university. So now you can see AI admin efficiency university. Click on it. So the whole slides are prepared. And one thing what you can do, now come to the first slide. Just on this designer tool, there's a designer tool on the top right. You can click it over here. This is my first slide. This is a template for the first slide. Okay. Now second slide is this, current administrative challenges. So there are some of the, on the right hand side, it can show you current administrative challenges. Now it's here. How AI helps, core capabilities. So it is how here. So all the, simply you just have to click on the design and you'll see different orientations, benefit to the university, safe and ethical adoption. So all my 6-slide presentation is ready within a couple of minutes. This has to be taken with the fees. This is not available free of cost. So this is available free of cost. There are certain applications, this I'm demonstrating in Microsoft Office, but there are certain app available. You can just give a prompt in the Chat GPT, just scroll all those information from there or download the file from there. After downloading the file, or even you can do it from, that's the free version. You can do it from gamma.app. So this is one of the portal. This is free. So these are the presentation with the single prompt. So create new. Now I am pasting this, create a 6-slide presentation for senior management, generate outlines and all. It will generate a card. These cards are called slides, and when you will download it, it will provide you a theme, presentations, and it will create everything by itself. So these are 6 slides, no? So I have just provided the prompt over there. It has created all those slides.
we can download it from. Gamma.app. It is available free of cost, and within couple of minutes you can create a fantastic PPTs of your choice with thousands of millions of templates available over there. You can search it out. Now, the last one is, because due to shortage of time, last one is I am using this within the Gmail. Like this is my email, no? So this is my Gemini over here. I have to click on Gemini and so draft a formal email. I'll paste it over here in the prompt at the bottom. So draft a formal email from the registrar to all the deans regarding submission of NAAC data by 25th जनवरी कर देते हैं सर इसको, नहीं तो ये सर हमारे अभी मांग लेंगे इस चीज़ को. So here it is, and it is creating within the Gmail. It is created. Now insert, and it is already inserted. Just type the recipient, subject, and it is all done. So suppose a mail is of very heavy mail consisting of 100 of pages. So you can just give a prompt over there. Summarize this email. Okay. So you have to use this within the email. Like say for example, this is one of my email, and in this email I can use this prompt. So it will summarize my email. It will read, and I'll ask to this AI that summarize within 100 words, summarize within 50 words. So it can summarize according to your patience level. So these are few of the tabs which I am using inside the Gmail. Draft a formal email, write a polite buffer. Where was the point of summarize in the Gmail? Sir, we can write it at the side over there. Summarize and then Yes, only. yes, sir. And we can also write a reply. Write, say for example, write positive reply. I don't want to write much more. I don't have the time. Say for example. So suppose, because this is my. So I'm replying this. So here is a tool. You can see the tool over here. Help me write Alt plus H. So when I press this, and I'll write a positive reply of this email. So create. So it has created, and if you want that it should be within 100 words, you can specify, write the positive reply within 100 words, so it can do by itself. So summarize is also there. Write an email to be sent by the dean reminding, this is the reminder. Okay, outside Gmail, because right now I have requested my CTO to enable the AI button in my Subharti University email. Okay, though this is the Gmail, but Gemini AI assistant is not available over here. It's not enabled. So I have requested to him. So in that scenario, we have a bypass. So how we can approach that? So suppose this is now this is my outside prompt. Refer my email. What are my pending tasks? Okay. So I'll go
on this, click on Gemini, and I'll paste this over here. Refer my emails. What are my pending tasks? So now it's searching within the university email. सर ये शॉर्टकट बता रहा हूँ ना इसमें, हाँ, तो उसके लिए सर आपको कोई एयरटेल का नंबर ले लीजिए, उसके साथ फ्री आ रहा है आजकल, बहुत सारी ऐप्स के साथ में फ्री आ रहा है ये, या फिर मतलब 1 साल के लिए फ्री है फिलहाल ये, तो वो आप ले सकते हो। स्टूडेंट को सबको फ्री है ये, सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री है ना, अपनी स्टूडेंट का वो डिटेल डालेंगे और वो फ्री हो जाएगा उसके लिए, हाँ इंक्लूड हो जाएगा। तो ये सारा इन्होंने लिख दिया है कि मेरे पास में कौन कौन सी ईमेल पे मेरा क्या क्या पेंडिंग टास्क है, और मुझे किस किस को रिप्लाई अब तक मैंने नहीं किया ये बता दी। कई बार हम बाउंड हो जाते हैं कि वी आर नॉट अवेयर कि व्हाट आर माय पेंडिंग टास्क, टू whom आई हैव टू रिप्लाई। सो इन दैट सिनेरियो, सपोज अ मेल इज of 1 month before and we have not yet replied, so in that it is a very very significant tool. Okay, so now refer my email, what are my upcoming meetings? Yes, this is very important. कई बार हम मीटिंग स्किप्स कर जाते हैं, जितने भी ऑफिसर्स बैठे हैं यहाँ पे, तो उनके लिए सिंपल आप प्रॉम्प्ट डालेंगे। सो ये उसमें है जिसमें वो जेमिनी का बटन नहीं है ना, तो उसके लिए ये हमने एक बाईपास बनाया है। बट आप तो उसी में ले रहे हैं ना, मेल में जाके? नहीं सर, ये मेल से बाहर है, ये तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये मेल से बाहर है, लेकिन हमारी मेल पढ़ रहा है। हमारी मेल के अंदर अटैच्ड है, मतलब जेमिनी का ऐप है जो हम उसको एक्सेस कर रहे हैं अपने जीमेल अकाउंट से। जीमेल पे भी तो जैसा बता रहे हैं वो आ नहीं रहा वहाँ। हाँ, उसी के लिए है सर ये। मैं दोबारा बता देता हूँ, देखिए मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। ये हमारी ऑफिशियल ईमेल है, दिस इज द ईमेल। सो हियर यू कैन सी, हाँ, वी हैव टू क्लिक ऑन दैट, Gemini is there, click on Gemini and now paste it. Refer my emails, what are my upcoming meetings. Refer my emails, you always have to write, okay, otherwise it does not hold any permission to check or to look up in your mails. So you can see it over here, प्रोक्टोरियल बोर्ड मीटिंग आ गई इसके अंदर, कहाँ पे है, 31, ये तो मेरा है खैर, ये तो this is a tool that we should use. This is a range, you can specify the range. Refer email, is there any meeting between 27th December to 31st December? Yes, you can do it over there. Okay, so ये लास्ट वाला सर आपके लिए है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा सा डेमो करके दिखाऊंगा कि हाउ वी आर यूजिंग इन मेडिकल practices. Notebook KLM, all of you have been trained by our worthy EO sir that how to use this KLM. So it is again, so Notebook LM is the name. So in the Notebook LM you can see now whatever emails reaches to me, I make a notebook and save it over there. Say for example, now I have to search what are my maternity leave policies. So I can click on the leave regulations and I can, because there are certain leave amendments, policies, so I have stored all those over here, all those, and I can simply give a prompt. So within all your policies and amendments, it will crawl the information and provide you the necessary information to you.
Along with that, there are certain tool on the rightmost side from where you can create the infographics. Like I have created an infographic, mind map is there. Okay, say for example, mind map is here. So this is a simple poster about the leaves. So we can create it by the KLM. Okay, and you can see now University Employee Leave and Attendance Policy 2025, General Principles, prior permission is mandatory, sanctioning authority. You can create a mind map of yours. Type of leave, yes. Casual leave, in which conditions the leaves can be availed. The medical leave, come to the medical leave. So requires some medical proof, eligible after 6 months of services, salary. So this is all. You can see it over here. So there are so many things, but the time is the limitations. And say for example, no sir, मैं आपको personally बताऊंगा सर इसको कैसे इस्तेमाल करना, क्योंकि my resource person is waiting for me, and we have to compile this within the time, and I'm 8 minutes late. I'm sorry for that. So I thank you all for coming over here, and if you have any query, questions, you may please ask. To take this program further, we also have an eminent speaker among us, Mr. Vikas Kalra, Director SETPA Infotech. He is a distinguished leader having more than 20 years of experience in driving excellence in professional training through innovation, quality and industry alignment. I respectfully invite Mr. Vikas Kalra, our esteemed resource person, to take over the session and enlighten us on administrative efficiency through AI. Let us imagine, create, evolve and transform ideas. Jai Hind. Jai Hind, okay. So we are here to discuss about AI, different AI tools, how to increase the administration efficiency through AI tools. But already Manoj sir has covered whatever topics I prepared, Manoj sir has already covered, but I'll dive deep into these modules and then we'll discuss more about this. So before going to start about this session about AI tools, I can firstly brief about myself. I am Vikas Kalra, co-founder and director at SETPA Infotech Private Limited. We started my journey, I can say I am a born teacher. I started teaching from when I was in 9th standard. In 9th standard, I was teaching 10th standard students. In 11th, I was teaching 12th standard students, maths, physics, chemistry. And हम लोग कहते हैं ना आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो that was the need of the hour that time कि my father was a patient of brain tumor for around 10 years. Immediately after completion of my BTech, he passed away. So when I was pursuing my BTech, that time during BTech second year, I started teaching different technologies. I am in BTech in Electronics and Telecommunication, ET branch. So मैंने सबसे पहले VHDL एक इलेक्ट्रॉनिक्स में लैंग्वेज होती है, I started teaching VHDL लैंग्वेज. नाम सुना है किसी ने? इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई है? VHDL, राइट? ओके, ग्रेट. तो VHDL एक काफ़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज है और साइंटिस्ट ने इसकी फुल फॉर्म बनाई है, वेरी हार्ड एंड डिफिकल्ट लैंग्वेज. ठीक है, सच में बहुत हार्ड है. व्हेन वी टॉक अबाउट कंप्यूटर लैंग्वेज, तो कंप्यूटर लैंग्वेज जनरली travels step by step or in a sequential way. But when I talk about VHDL hardware programming language, those generally run in a concurrent way. Means आपके पास कोई IC, कोई hardware, कोई device है, उसके लिए आपको भी, if I talk about one microprocessor having a billions of transistors inside it, and you want to make a coding or a program for that microprocessor, simulate that microprocessor. So in that case, you have to run the program in a concurrent way. So I started teaching VHDL, that is a part of VLSI. जो भी ICs आप लोग देखते हो, different microprocessor, microcontroller, DSP sizes. So these ICs are being designed into these languages, VLSI programming language. So I started my journey from there, starting teaching VHDL, VLSI programs. Then I entered into embedded system. Then I entered into robotics, then IoT. Around till 2008-9, I was into IoT related technologies only. From 2010 onwards, I switched into this AI technologies. So around 7-8 years back, I learned Python programming, data analytics, data science, machine learning, AI. So today I know how to even create the technology like ChatGPT and different LLMs. So I know when you are into the system, so you can manage the system better. So I always try to be a trainer along with the owner of this company. So today, if we talk about SETPA, so we are working to 3 verticals.
One is trainings into high-end technology, so we are providing training into cloud, networking, security, AI, data science, machine learning, even into, at our Noida campus, we have 3D printer labs, robotics labs, so into different mechanical designing tools. So we are doing a lot of training stuff. Training, we are even doing a lot of corporate trainings. Recently, we have completed a 400 employee training at Samsung on the same topic, AI tools only. Similarly, we have done a lot of trainings for Motherson, for Deccan. There are multiple clients. We are doing a lot of corporate trainings as well. So trainings, retail trainings, we visit the colleges, students visit our campus, retail trainings, corporate trainings, then we do a lot of government funded trainings also, a lot of CSR projects as well. Like our funders are Capgemini, IBM, Accenture. There are multiple big IT companies are there who are funders, and we do provide a lot of free of cost trainings as well. So these are about the trainings. Then we are parallelly working to manpower consultancy business. We do trainings, then we deploy the manpower on SETPA payroll, on client payroll as well. And third, we are working to software development business. तो हम लोग parallelly software development में भी work करते हैं. We are doing a lot of projects for especially countries from Middle East. Bahrain हम लोग का एक major country है जहाँ पे we are doing a lot of projects for Bahrain government also and a few other corporate clients as well. Right? So this is a brief about SETPA, about me. So without talking more about the same, we come to the topic AI. Sir ने already बताया आपको. तो सर आई वॉज सिटिंग इन द फ्रंट, सो आई वॉज नॉट गेटिंग योर रेस्पॉन्सेज. कितने लोग अभी चैट GPT यूज़ कर रहे हैं आप लोगों में से? कौन नहीं यूज़ कर रहा है? देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन आवर सेशन. ठीक है, सो प्लीज़ बी देयर, बी एक्टिव. ऑलरेडी इट्स 4 PM 4:30 PM, तो थोड़ा सा आई नो थोड़ा जो है सुस्त हो गए होंगे लोग, बट प्लीज़ बी देयर विद मी. लेट्स मेक दिस सेशन इंटरेक्टिव. प्लीज़ टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग चैट GPT. कितने लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं? राइट, 1 2 3 4 5 पीपल. राइट, ठीक है, गॉट इट. 6 7. राइट. तो हम जब चैट GPT की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले वी हैव टू इंटरेक्ट विद द AI. सर ने बताया आपको AI क्या चीज़ है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट AI जो है हमारे पास लाइक अ सुपर स्मार्ट ऑफिस असिस्टेंट है जो आपके लिए सारे काम, लाइक एन इंटर्न आपने हायर किया. अगर आप पेड टूल्स की भी बात करते हो तो दोज आर वेरी लो कॉस्ट पेड टूल्स. तो आपने एक इंटर्न हायर किया जो कि काफ़ी लो सैलरी में आपके लिए काम कर रहा है, बट डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू गाइज. ठीक है, स्मार्ट है, 24/7 अवेलेबल है. ठीक है, आपके लिए जो है वट एवर रिसर्च फील्ड यू टॉक अबाउट, किसी भी फील्ड की, दुनिया की किसी भी नॉलेज की आपको नीड है, इट विल गिव यू ऑन अ सिंगल क्लिक, इट विल गिव यू द कंप्लीट डेटा. राइट, सो दैट इज़ अ AI लाइक अ स्मार्ट ऑफिस असिस्टेंट या सुपर स्मार्ट ऑफिस असिस्टेंट है. ठीक है, तो वी कैन से, आप लोग वैसे तो AI एवरीवेयर दे बज AI ओनली, तो हम कह सकते हैं कि AI का हो साथ तो हम बन जाए स्मार्ट एंड सुपर फास्ट. ठीक है, तो हमें स्मार्ट एंड सुपर फास्ट बनना है तो वी नीड AI. अगर हम जनरली बोलते हैं कि AI जो है, कई लोगों के माइंड में मिथ भी है कि AI जो है जॉब्स ख़त्म कर देगा. AI जो है ऐसा नहीं होने वाला. जो आपकी फील्ड की जॉब्स हैं तो डेफिनेटली कभी जाने नहीं वाली है. ठीक है, कोविड के टाइम पे सेटपा में भी वी हैव सीन अ लॉट ऑफ शिफ्ट फ्रॉम ऑफलाइन ट्रेनिंग्स टू ऑनलाइन ट्रेनिंग्स. बट अभी मैं दोबारा देखता हूँ तो काफ़ी सारे ऑनलाइन बड़े एडटेक प्लेयर्स मार्केट से आउट हो गए. दैट इज़ कि अभी दोबारा से स्टूडेंट्स आर मूविंग टुवर्ड्स ऑफलाइन ट्रेनिंग्स ओनली, या ऑफलाइन एजुकेशन ओनली. ठीक है, सो AI won't replace you, but it will be, if you are not using AI, then AI can replace you. ठीक है, the people who are using AI, they can replace you. So firstly, हम replace हों इससे पहले हम AI को यूज़ करना स्टार्ट करें. That's the target. So AI का हो साथ तो हम बन जाए स्मार्ट एंड सुपर फास्ट. सो AI एक ओवरऑल आइडिया तो आप लोग को मिल गया, बट AI अगर मैं बैकग्राउंड में थोड़ा सा डिस्कस करूँ, व्हाट इज़ AI फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस किसकी बात कर रहे हैं हम? ह्यूमन इंटेलिजेंस की. ह्यूमन इंटेलिजेंस कहाँ से आती है? ब्रेन से आती है. ब्रेन में हमारे पास ब्रेन में हमारे पास क्या होता है? एक नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स का, जिसको हम न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे. तो न्यूरल नेटवर्क में भी हमारी मैथमेटिक्स होती है, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं. तो न्यूरल नेटवर्क वाली मैथमेटिक्स को क्या किया गया AI में उस मैथमेटिक्स को खाली सिमुलेट किया गया है. तो AI के जो आपके ह्यूमन ब्रेन में जो नेटवर्क है जो उस मैथमेटिक्स पे काम करता है, उसके अंदर हमारे कुछ नेटवर्क्स होते हैं. उस नेटवर्क्स को हमने अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर लेके आए उस मैथमेटिक्स को, और हमने AI सिस्टम्स बनाना शुरू किया. तो जो फाउंडेशन है AI का, दोज आर द न्यूरल नेटवर्क्स ओनली. तो हमारे पास कुछ मॉडल्स हैं, ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, CNN कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, RNN, इस तरह के मॉडल्स हैं जो दैट वी आर यूजिंग इन द बैकग्राउंड. और हम लोग AI पे काम करना हमने स्टार्ट किया, AI मॉडल्स डेवलप करना स्टार्ट किया. सो दैट इज द ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ AI.
तो आप लोग मुझे बता सकते हो व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स या ऐसी टेक्नोलॉजीज, ऐसी वेबसाइट जो एआई को यूज़ कर रही हैं? कैन यू नेम फ्यू ऑफ देम? गूगल सिरी, वेरी गुड. एप्पल्स, और बाकी और कुछ? एलेक्सा, वेरी गुड. व्हाट्सएप में भी आप आपके पास एआई चैटबॉट्स आ गए हैं, राइट? देन माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर है, ओके. देन Salesforce, nice, great. Then Even cell phones also for facial recognition also AI is important. so any technology you talk about, any big, अगर कोई भी कंपनी, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसका शायद टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का होगा, तो दैट इज दोज आर यूजिंग एआई. यू टॉक अबाउट एनी प्रोडक्ट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, पेटीएम, एनी प्रोडक्ट यू टॉक अबाउट, सभी के अंदर रिकमेंडेशन सिस्टम्स लगे हुए हैं. ठीक है, आपको नहीं पता शायद आपको किस टाइप के एड्स पसंद होंगे, बट गूगल इज अवेयर अबाउट यू. आज आपने मोबाइल फ़ोन सर्च किया, आफ्टर 1 मंथ यू आर विजिटिंग अ वेबसाइट से सुलेखा.com, तो सुलेखा पे आपको मोबाइल फ़ोन या मोबाइल फ़ोन के एक्सेसरीज़ के एड्स आ रहे होंगे, क्योंकि गूगल ने आपके बिहेवियर को कैप्चर किया, ट्रेन किया अपने सिस्टम को, और आपको रेस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दिया. सो दैट इज़ एवरीवेयर देयर इज़ एआई टुडे. अगर हम एआई को नहीं यूज़ कर रहे तो समवेयर और द अदर, अभी नहीं तो कुछ टाइम के बाद हम रिप्लेस हो जाएंगे, ये गारंटी है. तो हमें अपने आप को अपस्किल करना है एआई के ऊपर, दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर. ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट एआई. एआई से हम स्टार्ट करते हैं, तो एआई से हम लोग कहाँ पे अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को हम वेस्ट कर रहे हैं? सर ने बताया आपको, हम ईमेल जो है रिपीटेटिव, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है, रिपीटेटिव ईमेल्स आते होंगे, कंप्लेन ईमेल्स, तो वहाँ पे मैनुअली देयर में बी टीम ऑफ 2, 5, 10 मेंबर्स जो मैनुअली ईमेल को रेस्पॉन्ड कर रहे हैं. बट यू कैन क्रिएट अ सिस्टम लाइक चैटबॉट्स. चैट जीपीटी के आगे एक टेक्नोलॉजी आती है RAG, रैग टेक्नोलॉजी. ठीक है, रैग टेक्नोलॉजी से कस्टमाइज चैटबॉट्स बनते हैं. अभी हम लोग हमें एक ऑर्डर मिला है अगेन बहरीन, एक कंट्री से, जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिसिपैलिटी को क्या चाहिए कि उनके पास डेली ईमेल्स आते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईमेल्स, दैट पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, मैंने बिल्डिंग अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट किया था, पेमेंट भी कर दिया था, अभी अप्रूवल नहीं आया. तो व्हाट दे वांट कि वो एक सिस्टम बनाना चाहते हैं, हमने इंग्लिश प्लस अरेबिक लैंग्वेज में बनाना है, उसको डिज़ाइन करना है. दैट इज ए कस्टमाइज चैटबॉट. एक चैटबॉट है जो ओपन चैटबॉट है. कस्टमाइज चैटबॉट इज, अगर आप चैट जीपीटी से बोलो कि मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना है, तो चैट जीपीटी वॉन्ट लेट यू नो, बट यू विल गो टू द बैंक वेबसाइट, वहाँ पे भी अगर चैटबॉट अवेलेबल है, यू विल फर्स्टली एंटर यूजर नेम, पासवर्ड, OTP, देन यू विल एंटर इनटू द सिस्टम. लेकिन वहाँ से जो रेस्पॉन्स आएगा दैट विल बी चैट जीपीटी इनेबल्ड ऑल्सो, LLM इनेबल्ड ऑल्सो, प्लस आपका बैंक का इंटरनल डेटा भी यूज़ होगा. जैसे सर ने अभी LLM नोटबुक के बारे में आपको दिखाया. ठीक है, आप नोटबुक LLM यूज़ कर रहे थे, तो उसके अंदर क्या है, वो जो रेस्पॉन्स आपको दे रहा है वो खाली आपको जनरल ओपन रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, आपके डेटा के ऊपर फोकस होकर आपको रेस्पॉन्स दे रहा है. राइट, सो सच वे यू कैन डेवलप अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन, लॉट ऑफ सिस्टम्स फॉर द यूनिवर्सिटी, जिससे आप कहीं ना कहीं रिड्यूस कर सकते हो, एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हो, और मैन आवर्स जो है जितने रिक्वायर्ड हैं जिस भी टास्क में, उसको आप नंबर ऑफ आवर्स को रिड्यूस कर सकते हैं. राइट, सो देयर आर लॉट ऑफ टास्क वेयर यू कैन यूज. सो एआई एज योर स्मार्ट ऑफिस असिस्टेंट क्या क्या काम कर सकता है आपको ऑलरेडी आइडिया है. सर ने बताया आपको काफ़ी टूल, सर ने बताया ऑलमोस्ट आई कैन से कि सर का जो PPT है मेरा ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट कुछ हम लोग बेटर, जो सर ने ऑलरेडी आपको बताया उसमें थोड़ा सा हम लोग एक नेक्स्ट स्टेप आगे मूव हो जाते हैं. ठीक है, हम बात करते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की. प्रॉम्प्ट किसको किसको पता है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉम्प्ट? प्रॉम्प्ट होता क्या है? 1, 2, 3, राइट, राइट, 5. ठीक है, तो 5 पीपल आर देयर जिनको पता है प्रॉम्प्ट क्या है. प्रॉम्प्ट क्या होता है? जो भी हम चैटबॉट्स यूज़ करते हैं, जो भी हम एआई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, उसको जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ प्रॉम्प्ट. ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन हम लोग अपने एआई एप्लीकेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये काम कर दो, ये इमेज बना दो, ये वीडियो डेवलप करके मुझे दे दो, तो दैट इज़ अ प्रॉम्प्ट. तो इस प्रॉम्प्ट को बेटर अंडरस्टैंड करना कम्स इन द फील्ड ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज जहाँ पे हम स्टडी करते हैं कि कैसे क्लियरली हमें अपने चैटबॉट्स को, अपने LLM मॉडल्स को कैसे इंस्ट्रक्शन देनी है कि हम बेटर रेस्पॉन्स जनरेट कर पाएँ. राइट, सो दिस इज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपको देखो इसके बिना काम नहीं चलना. जो लोग चैट जीपीटी नहीं यूज़ कर रहे, ठीक है, मतलब आप अपना बहुत सारा टाइम किल कर रहे हो लाइफ का. राइट, चैट जीपीटी चाय नहीं पीता, पर आपको चाय पीने के लिए अच्छा टाइम दे देगा अगर आप चैट जीपीटी या चैटबॉट्स यूज़ करना स्टार्ट करोगे. सो दैट इज़ कि फॉर्मूला अच्छा, अगर आपको प्रॉम्प्ट बनाना है चैट जीपीटी को, आपको ग्रोक को, आपको जेमिनाई से रिक्वेस्ट करना है, अच्छा आपको प्रॉम्प्ट बनाना है, तो उसके लिए क्या रूल्स हैं, वो रूल्स थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट आंसर्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे. राइट, सो फर्स्ट इज मीन्स आपके पास फॉर्मूला है RTCFC. हम बोलते हैं RTCFC, काफ़ी पॉपुलर टर्म है.
आपका प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर और इवन इंडस्ट्री में काफ़ी सारी जॉब्स हैं. इवन आप अपने स्टूडेंट का डिस्कस भी कर सकते हो. देयर आर मैनी जॉब्स. अ पर्सन इज फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, फ्रॉम फार्मा बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सिविल बैकग्राउंड, किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा है वो जाके प्रॉम्प्ट इंजीनियर की जॉब भी अप्लाई कर सकता है, जहाँ पे उसको हायर किया जाता है कि कंपनीज़ के डे टू डे टास्क को ऑटोमेट करने के लिए कैसे बेटर प्रॉम्प्ट्स लिखने हैं. और एवरेज सैलरी ऑफ अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर इज मच बेटर देन अ फ्रेश इंजीनियर, आई कैन से, राइट. ठीक है, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक बहुत हॉट और बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है. तो इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आपको चैट जीपीटी यूज़ करना है, काम नहीं चलेगा उसके बिना, उसको बेटर कैसे यूज़ करना है. तो आपका जो प्रॉम्प्ट है, जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो अपने चैटबॉट को, उसको आपको RTCFC फॉर्मेट में रिक्वेस्ट करना है. RTCFC स्टैंड्स फॉर, R स्टैंड्स फॉर रोल. सबसे पहले आपको बताना है कि आपका रोल क्या है. अगर आप नॉर्मली चैटबॉट से पूछोगे व्हाट इज़ AI, तो आपको AI की डेफिनेशन बताएगा. लेकिन अगर आप बोलोगे कि आई एम अ टीचर, आई हैव टू टीच टू माई स्टूडेंट्स, आपने रोल बताया, तो आपको चैट जीपीटी डेफिनेशन एक टीचर की फॉर्म में बताएगा, जिसको आप जाके डायरेक्टली क्लास में एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट. तो सबसे पहले आप रोल को एक्सप्लेन करो. देन एग्जैक्टली आपको टास्क करना क्या है. आपको ईमेल राइट करना है. यू आर अ डीन ऑफ द कॉलेज, यू आर अ रजिस्ट्रार ऑफ द कॉलेज, और आपको क्या करना है, एक ईमेल राइट करना है. तो आई एम अ रजिस्ट्रार ऑफ द कॉलेज एंड आई वांट टू राइट एन ईमेल. ईमेल क्या है, ईमेल राइट करना इज अ टास्क. आपने टास्क मेंशन किया. देन यू आर राइटिंग कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट सेट करना है कि ईमेल तो भेजना है आपने, पर ईमेल भेजने का पर्पज़ क्या है, एग्जैक्टली ईमेल में क्या लिखने जा रहे हो आप. ठीक है, तो आपने कॉन्टेक्स्ट यानी कि बैकग्राउंड, ऑडियंस, पर्पज़ क्या है वो आपने मेंशन किया. देन आपको F फॉर्मेट देना है. किस फॉर्मेट में आपको चाहिए, बुलेट पॉइंट्स चाहिए, यू नीड पैराग्राफ फॉर्मेट में आपको चाहिए, या टेबुलर फॉर्मेट में आपको रेस्पॉन्स चाहिए, वो आपको फॉर्मेट प्रोवाइड करना है. और अगर कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, जनरली हम गूगल चैट जीपीटी से पूछते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, तो 500,000 2000 वर्ड्स का हमें एक रेस्पॉन्स जनरेट करके दे देता है. हमें उतना नहीं पढ़ना, तो वी कैन गिव सम कंस्ट्रेंट्स की हमें 50 वर्ड्स में ही रेस्पॉन्स चाहिए. दिस वे वी कैन मेंशन, वी कैन गिव अ प्रॉम्प्ट, a better prompt to a LLM model to get the better results, to get the required results. Are you getting this? कोई डाउट है किसी को? Any question? तो ये आप याद कर सकते हो RTCFC. इस फॉर्मेट में अगर हम रेस्पॉन्स या रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें बेटर रिजल्ट्स आएंगे. ठीक है, तो हम लोग जनरली कई बार ऐसा होता है, आप लोगों ने चैट जीपीटी जिन्होंने यूज़ किया होगा तो ब्लेम करते होंगे कि सही आंसर नहीं आ रहा. लेकिन ब्लेम कहाँ पे है, मेजर रीज़न 99% केसेस में हमारा प्रॉम्प्ट अच्छा नहीं था. हमने जो रिक्वेस्ट किया चैटबॉट को वो सही रिक्वेस्ट नहीं किया, तो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे. ठीक है, तो हमें प्रॉम्प्ट को, चैटबॉट को ब्लेम नहीं करना, अपने प्रॉम्प्ट की कमी है. प्रॉम्प्ट को हम बेटर करेंगे, हमें बेटर रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, सो कुछ एग्जाम्पल्स, सर ने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपको दे के दिखाए हैं, बट मैं आपको इसी फॉर्मेट में, ठीक है, अभी हमने एक फॉर्मेट डिस्कस किया, दैट इज़ RTCFC. इस फॉर्मेट में अगर हमें एक रिक्वेस्ट करना है चैटबॉट को, तो किस टाइप के आंसर्स हमारे पास आएंगे वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, अगर मैं पूछता हूँ चैट जीपीटी से व्हाट इज़ AI, ये मेरा एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट है. मैंने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया है, टॉप राइट में आपको दिख रहा होगा व्हाट इज़ AI. तो इसने मुझे AI इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मशीन और कंप्यूटर सिस्टम टू थिंक, लर्न एंड मेक डिसीजन लाइक अ ह्यूमन. ठीक है, सो ये आपके पास एक कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं व्हाट इज़ AI के बारे में, और AI की डेफिनेशन आपको बताई गई है. शायद ये AI की डेफिनेशन आप स्टूडेंट्स को बताओगे, या कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे होंगे, तो उनको शायद ये डेफिनेशन समझने में थोड़ा चैलेंज होगा. तो इसी को अगर हम थोड़ा डिफरेंट वे में अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ AI, तो हमने डिस्कस किया RTCFC. ठीक है, सबसे पहले रोल, RTC, T का मतलब टास्क, RTCFC, C मतलब कॉन्टेक्ट्स, देन F मतलब फॉर्मेट, एंड देन C मतलब कंस्टेंट्स. सो रोल, टास्क, कॉन्टेक्ट्स, फॉर्मेट एंड कंस्टेंट्स. रोल, I am the faculty in a college or university. Task, I want to teach AI. Contacts, to students of B.Tech or B Pharma. Format, ठीक है, I want to teach AI. Suggest
what AI is. Format is in bullet points. Constraints means अगर आपको उसमें कुछ कंस्टेंट देने हैं, इतने वर्ड्स का रिजल्ट होना चाहिए, ऐसी टोन होनी चाहिए, ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए, कुछ आपको कंस्टेंट्स ऐड करने, यू कैन ऐड द कंस्टेंट्स इनटू दी योर रिक्वेस्ट. तो कंस्टेंट इज लाइक कीप इट अ फनी लैंग्वेज to teach. You can put some analogies in funny way. अभी हमने ऊपर AI पूछा, अब हमारा AI का जो रेस्पॉन्स है वो एंटायरली डिफरेंट हो जाएगा कि व्हाट इज AI. इफ वी आर एडिंग इट लाइक दिस, here's a bee pharma friendly funny and easy way to explain what is AI. AI is मशीन का दिमाग, just like a pharmacist uses brain plus experience. जैसे कि एक फार्मासिस्ट आपका ब्रेन को और एक्सपीरियंस को यूज़ कर रहा है, वैसे ही आपके पास जो है AI क्या है, आपके मशीन का माइंड है, राइट. सो AI यूजेस डेटा प्लस एल्गोरिथम्स. AI मीन्स कंप्यूटर जो सिर्फ याद नहीं करता, समझने की एक्टिंग भी करता है, राइट. तो अगर आपको टीच करना है तो आप देखोगे कि आपको मच बेटर वे में आप टीच कर सकते हो. जनरली हम लोग कई बार एज ए ट्रेनर, एज ए टीचर हम लोग फील करते हैं कि यार वो टीचर है बहुत अच्छी एनालॉजीज यूज़ करता है पढ़ाते हुए, ठीक है, कि ये है, इसको मान के चलो ये घोड़ा है, ये हाथी है. ऐसे बहुत सारे कई सारे टीचर्स होते हैं, थोड़ा फन वे में क्लास को पढ़ाते हैं. तो उसी फन वे में, लेकिन हम जब नोट्स भी बना रहे होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हम किससे रिलेट करें अपने इस टॉपिक को. तो आप AI से पूछोगे, ये आपको रिलेट करके बता देगा और अकॉर्डिंगली यूल गेट द बेटर रिस्पॉन्सेज एज पर योर इनपुट्स, ठीक है. बाकी बनाना क्या है, आपका पर्पज़ क्या है, यू आर द ऑफिसर, सो आपको ईमेल राइट करना है, SOP बनाना है आपको, यू वांट टू राइट दी HR पॉलिसीज़, HR पॉलिसी के लिए आपको लीव के लिए कुछ आपको बनाना है डिज़ाइन, ठीक है. तो HR डिपार्टमेंट को परफॉर्मेंस फीडबैक के लिए मेल करना है, तो आप RTCFC फॉर्मूला याद रखोगे तो आपको एंटायरली बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे. सेम ChatGPT है, सेम गूगल आपका जेमिनाई है, सेम आपके पास जो है ग्रोक है, लेकिन आपको रिजल्ट जो है वो डिफरेंट होंगे, आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप सही से अपने प्रॉम्प्ट को मेंशन करते हो तो, राइट. सो एक्ट एज एन HR मैनेजर इन अ यूनिवर्सिटी, हमने रोल मेंशन किया. आपको क्या करना है, ड्राफ्ट परफॉर्मेंस फीडबैक देना है. कॉन्टेक्स्ट क्या है, स्टाफ मेंबर पंक्चुअल है बट डिले रिपोर्टिंग है. पंक्चुअल तो है हमारा एक एम्प्लॉई, बट वो रिपोर्टिंग सही से टाइम पे नहीं करता, ठीक है. जब भी उसको कोई रिक्वेस्ट करो तो टाइम पे रिपोर्ट्स नहीं मिलती है, वो हमारा कॉन्टेक्स्ट है. फॉर्मेट प्रोफेशनल फीडबैक नोट और कंस्टेंट्स बैलेंस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव लैंग्वेज. इस तरह से आप ChatGPT को रिक्वेस्ट करोगे, अपने LLM मॉडल को रिक्वेस्ट करोगे, you'll find much better results, right. ठीक है, गॉट इट. शुड वी कंक्लूड दिस टॉपिक, राइट, ठीक है. तो दिस वे सर ने काफ़ी सारे अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिए हुए थे. NAAC में आपने कोई रिक्वेस्ट करना है आपको, या जो है आपको फॉर एग्जांपल आई कैन से RTCFC. सो आपको फॉर एग्जांपल आपको यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करना है कुछ एक नई ब्रांच ऐड करने के लिए इन योर कॉलेज, ठीक है. तो कंसीडर मी एज, या कंसीडर यू और कंसीडर मी एज द रजिस्ट्रार और डायरेक्टर ऑफ द कॉलेज ये हमारा रोल हो गया. टास्क क्या है, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं एक ईमेल लिखवाना, ठीक है, या एक प्रपोजल राइट करवाना. राइट अ प्रपोजल, ठीक है, ये हमारा टास्क है कि हमें एक प्रपोजल राइट कराना है. फिर कंस्टेंट्स हमारे पास क्या है कि हम कॉन्टेक्स्ट क्या है हमारा, प्रपोजल किस लिए लिखवाना चाहते हैं, हमारा कॉन्टेक्स्ट है कि टू ऐड एन एडिशनल AI ब्रांच इन कॉलेज, ठीक है. फॉर्मेट कैसा चाहिए आपको, ठीक है, आप नॉर्मल प्रपोजल फॉर्मेट भी मेंशन कर सकते हैं, फॉर्मेट. और कंस्टेंट्स अगर कुछ हैं आपके पास, आपको जो है समरी देनी है, आपको रेस्पॉन्स जो जनरेट करना है वो आपका पैराग्राफ फॉर्मेट में, पैराग्राफ्स विद हेडिंग फॉर्मेट्स में आपको चाहिए, ठीक है. एंड अ डिटेल्ड प्रपोजल की आपको नीड है, ठीक है. तो आपके पास सब ऑटोमेटेड है, आपको सारे सिस्टम्स ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा प्रपोजल बन के आपके पास रेडी हो जाएगा, ठीक है. सर ने छोटे कुछ आपको एग्जांपल्स दिए थे जहाँ पे हम ईमेल्स बना रहे थे, बट इफ़ यू वांट टू क्रिएट द लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको बड़े डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, आपको कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है 100 पेजेस की, आप ChatGPT को रिक्वेस्ट करोगे, गूगल जेमिनाई को रिक्वेस्ट करोगे,
वो आपको 1 पेज 2 पेज या मैक्सिमम 10 पेजर की रिपोर्ट बना के देगा और आपको 100 पेज की रिपोर्ट चाहिए, क्या करेंगे फिर आप लोग? व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन? आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाना है, ठीक है, अब उस पूरे सब्जेक्ट की आपको अराउंड 1000 पेजेस की कोई बुक बनवानी है चैटबॉट से उस सब्जेक्ट के ऊपर। चैट जीपीटी चैटबॉट्स तो आपको 10 पेजेस 20 पेजेस का ही रेस्पॉन्स जनरेट करके देंगे। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी टास्क को पहले एक मेजर टास्क आप रिक्वेस्ट करोगे और मेजर टास्क के बाद सब टास्क आप रिक्वेस्ट करोगे उसको, ठीक है। मीन्स आपके पास ये प्रपोजल बन गया, अगर आप इसको बोलोगे कि इसको वर्ड फॉर्मेट में पीपीटी फॉर्मेट में बना के दे दो, ठीक है, इंट्रोडक्शन रैशनल फॉर इंट्रोड्यूसिंग ए ब्रांच, रेलेवेंस ऑफ एआई अक्रॉस डिसिप्लिन्स, प्रपोज स्ट्रक्चर ऑफ द ए ब्रांच, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्स रिक्वायरमेंट, फैकल्टी डेवलपमेंट एंड एकेडमिक एक्सेलेंस, स्टूडेंट आउटकम्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल बेनिफिट्स, इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन, कंक्लूजन एंड रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो ये एक छोटा प्रपोजल है, आपको इसको 50 पेजर बनवाना है, राइट, तो यू कैन राइट, आपने पॉइंट नंबर 1 लिया, यूज पॉइंट नंबर 1, इंट्रोडक्शन, मेक अ डिटेल्ड introduction of the proposal, make a detailed introduction of the proposal। तो आपके पास इंट्रोडक्शन एलोबरेट हो जाएगा। अब इंट्रोडक्शन के अंदर भी कुछ पॉइंटर्स हो सकते हैं, उन पॉइंटर्स को फिर आप डिटेल्स की रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो आपको और डिटेल्ड आउटपुट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। सो दिस इज लाइक दिस। जैसे आपको कोई सब्जेक्ट, अगर आपका डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कोई है, कोई आप एग्जाम्पल मुझे बताओ जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। VHDL, ठीक है, राइट। आई वॉन्ट टू राइट अ बुक ऑन VHDL, या आप बोल सकते हो कि आई हैव टू टीच VHDL टू द स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपने बोला सजेस्ट द कंटेंट, ठीक है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक VHDL, बेसिक टू एडवांस्ड। बेसिक से लेके एडवांस तक आपको नीड है, ठीक है। आप कुछ कंस्ट्रेंट्स देना चाहते हैं, साथ में ऐड करना चाहते हैं, आप कंस्ट्रेंट्स ऐड कर सकते हैं। आपको लैंग्वेज किस टाइप की रखनी है, कीप इट अ फॉर्मल लैंग्वेज नॉट अ फनी लैंग्वेज, आपने फॉर्मल लैंग्वेज मेंशन कर दी, ठीक है। मेक इट अ डिटेल्ड वन, आपने मेंशन कर दिया तो डिटेल्ड आपके पास रेडी हो जाएगा। ये हमने रिक्वेस्ट किया, प्रॉम्प्ट दिया और हमारे पास जो है पहले कंटेंट रेडी हो गया। पार्ट 1 फाउंडेशंस ऑफ डिजिटल डिज़ाइन इन VHDL, इसके अंदर आपके पास चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल सिस्टम्स, टोटल, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से आपके पास पार्ट्स रेडी हो गए, ठीक है। ये दीज आर द पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। नाउ आपको बुक लिखनी है, ये मल्टीपल आप देखो चैप्टर्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज इवन इट इज सेइंग कि वी हैव दिस कंटेंट टू यूनिवर्सिटी सिलेबस UGI UG PG, तो आपको ये सारे कॉन्टेक्ट्स आपको मेंशन करने हैं, वो सारे आप जो है रेलेवेंट आप ऐड कर सकते हो। अब आउट ऑफ दिस अगर आपको चाहिए इंट्रोडक्शन टू डिजिटल डिज़ाइन, इसके ऊपर अगर आप डिटेल्स लेना चाहते हो, और या फिर ये मैंने टॉपिक कॉपी कर लिया, चैप्टर 1 का फर्स्ट पॉइंटर कॉपी कर लिया। देयर आर 20+ चैप्टर्स आर देयर, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पॉइंटर मैंने कॉपी किया एंड राइट द contents of the book for this chapter in heading, subheading and paragraphs format, ठीक है। तो आपके पास इस टॉपिक के ऊपर आपके पास जो है कंटेंट रेडी हो गया। इंट्रोडक्शन 1.1 इस चैप्टर 1 का, इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इस चैप्टर 1 का आपके पास जो है इंट्रोडक्शन, अर्ली कंप्यूटिंग एंड मैकेनिकल सिस्टम, ट्रांजिशन फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब आपके पास रेडी हो गया। चैप्टर 1.1 के ऊपर आपको एक डिटेल्स मिल गया आपका। इजीली इस तरह से आप यू कैन क्रिएट अ कंप्लीट बुक ओवर एनी टॉपिक यू टॉक अबाउट। आर यू गेटिंग दिस राइट? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है यहाँ तक? फिगर डायग्राम, अगर आपको डायग्राम चाहिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर AI आपके पास जो है AI बनाना नाम से बहुत अच्छा गूगल का ही प्रोडक्ट है, आप उसको यूज़ करके काफ़ी अच्छी इमेजेस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है।
जो चैटबॉट है इसके अंदर अगर आप इमेजेस बनाओगे तो हार्डली 2, 3, 4 इमेजेस के बाद वो आपको फ्री एक्सेस के लिए मना कर देगा। तो आप एआई बनाना, ऐसे मल्टीपल टूल्स है, गूगल में आप टाइप करोगे टूल्स फॉर एआई फॉर इमेज क्रिएशन, तो यूल गेट थाउजेंड्स ऑफ टूल्स जहाँ पे आप एआई के थ्रू आप डेवलप कर सकते हो। या वर्ल्ड का सबसे बेस्ट टूल जो आज के डेट में हाईएस्ट जिसकी पॉपुलैरिटी है वो टूल है कैनवा। अगर आपने यूज़ किया हो, शायद आपके बच्चे ज़रूर यूज़ करते होंगे, ठीक है। 3rd, 4th, 5th स्टैंडर्ड के बच्चे कैनवा यूज़ करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स में, राइट। फेसबुक पे, इंस्टा पे अपने जो है कुछ भी इमेजेस, कुछ पोस्ट डालने के लिए कैनवा काफ़ी यूज़ होता है। तो कैनवा इज़ द बेस्ट टूल टू क्रिएट इमेजेस। आप जैसा प्रॉम्प्ट दोगे वैसे आपको आउटपुट्स मिल जाएंगे, ठीक है, जैसा प्रॉम्प्ट वैसा आउटपुट। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो हमें मिल रहा है ये सोर्स एज इट इज हमें दिखा रहा है या अपनी लैंग्वेज में दिखा रहा है? सर ने जैसे भी बताया था कि आप परप्लेक्सिटी अगर यूज़ करते हो, परप्लेक्सिटी में आपको हर एक कंटेंट का सोर्स भी मिल जाएगा, ठीक है। आप मतलब जरूरी नहीं चैट जीपीटी यूज़ करना है, कोई भी एआई आप एलएलएम यूज़ करो, तो परप्लेक्सिटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको कोई ऑफिशियल कंटेंट, आपको स्पेशली एजुकेशन से रिलेटेड, आपको रिसर्च वर्क में काम करना है और आपको साइटेशंस की नीड है, तो आप फिर परप्लेक्सिटी को अंदर सेम फॉर्मेट है ये RTCFC, इसी फॉर्मेट में आप रिक्वेस्ट करोगे, अपना प्रॉम्प्ट दोगे और आपको अकॉर्डिंगली आउटपुट्स मिल जाएंगे। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि चैट जीपीटी जो है ये वहाँ से सोर्स से डायरेक्ट उठा रहा है या अपनी लैंग्वेज में? अपनी लैंग्वेज में बना रहा है वैसे ही, अपनी लैंग्वेज में। ये सारे LLM टूल जो है उठाते हैं सोर्सेज से और फिर अपनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट भी करते हैं। और उसके अलावा भी जैसे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सेटपा में, हमारे पास एक टीम है अराउंड 10 मेंबर्स की जो डिजिटल मार्केटिंग करती है सेटपा के कोर्सेज़ की। तो गूगल में अगर आप सर्च करोगे समर ट्रेनिंग इन नोएडा, डेटा साइंस ट्रेनिंग इन इंडिया, बेस्ट एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो आपको मिलेगा टॉप 10 में आपको मिलेगा सेटपा की वेबसाइट दिख जाएगी। दैट इज़ कॉल्ड SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो गूगल एक सर्च इंजन है, मार्केट में थाउजेंड्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स हैं, बट उसमें सेटपा की वेबसाइट, सुभारती यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को टॉप में लेके आना, तो दैट कम्स अंडर SEO, डिजिटल मार्केटिंग का एक कॉन्सेप्ट है ये। तो SEO में गूगल क्या करता है, जिन वेबसाइट्स पे AI बेस्ड कंटेंट नहीं है उनको वो ऊपर रखता है, और जिन वेबसाइट्स पे AI बेस्ड कंटेंट्स हैं उनको वो थोड़ा पेनलाइज करता है। तो गूगल चाहता है कि आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट हो, गूगल क्या है, गूगल का अपना बिजनेस कहाँ से चल रहा है, यूज़र से चल रहा है। यूज़र google.com पे आएंगे, कुछ सर्च करेंगे, अगर उनको कोई अच्छी वेबसाइट नहीं मिली तो वो क्लाइंट जो है वापस गूगल पे ना के याहू पे या किसी MSN पे, किसी दूसरे सर्च इंजन पे चला जाएगा। तो गूगल इज़ वेरी चूजी कि कौन सी वेबसाइट को टॉप 10 में लेके आना है, राइट। तो वहाँ पे नीड होती है ओरिजिनल कंटेंट की। तो आपके पास ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, सर ने भी ग्रामरली के बारे में भी डिस्कस किया था। तो आप चैट जीपीटी से, ठीक है, आप जो है को पायलट से आप कंटेंट लिखवा के उसको फिर, इसको बोलते हैं कंटेंट स्पिनिंग। स्पिनिंग मतलब क्या होता है, कंटेंट वही रहेगा, थोड़े वर्ड्स आगे पीछे हो जाएंगे ताकि आपके वो प्लेगरिज्म के अंदर ना आए, ठीक है। तो आप कंटेंट की स्पिनिंग सेम टूल से भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, या किसी एक टूल में आपने अपनी एप्लीकेशन, अपनी बुक राइट करवाई और दूसरे एप्लीकेशन में जाके आपने उसको स्पिन करा दिया कंटेंट को, ठीक है, स्पिन दी कंटेंट, तो आपके पास वही कंटेंट थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज में आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस? सर एआई कंटेंट मतलब रिड्यूस करना हो, ह्यूमनॉइड बनाना हो उसको, किसी चीज़ को, जी जी, तो उसके लिए क्या किया जाए? ब्लैक तो हो जाता है चेंज, पैराफ्रेजिंग वगैरह करके, जी जी, लेकिन अगर एआई कंटेंट को हमें रिड्यूस करना है, मतलब ये एआई सारी चीज़ें रिमूव करने के लिए क्या? एआई कंटेंट, मतलब एआई कंटेंट जो आता है कि 99% एआई जनरेटेड ही, तो उसको हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको रिड्यूस कैसे किया जाए? मैं उसके लिए कह रहा हूँ, आप क्या करो, बेटर है कि जब कंटेंट बनाओ तो उसको 2-3 बार अलग अलग एप्लीकेशन से स्पिन करवा लो उस कंटेंट को। आपने कंटेंट लिखा VHDL के ऊपर, आपने कहाँ लिखा, चैट जीपीटी में। अब आप गूगल जेमिनाई में गए और आपने बोला इस कंटेंट को स्पिन कर दो, थोड़ा मॉडिफाई कर दो। जेमिनाई में स्पिन कराया, फिर वहाँ से जो कंटेंट आया आप तीसरी एप्लीकेशन के पास गए, को पायलट के पास गए, वहाँ पे बोला इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दो, इसको ये आपका AI जैसा नहीं लगना चाहिए कंटेंट, थोड़ा और बेटर फील, लुक एंड फील दे दो। आप उसको जो है उसकी लैंग्वेज में आप जो है कंस्टेंट्स डाल दो, किस तरह के कंस्टेंट्स होने चाहिए, तो आपके पास थोड़ा थोड़ा वो AI जो है, AI जो डिटेक्ट करता है वो AI डिटेक्शन थोड़ा रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा आपका। एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चन? हाँ जी, जैसे मैं केमिस्ट्री से बिलोंग करती हूँ, जी, तो उसके जैसे हम कोई कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं तो उसके लिए डिफरेंट कैरेक्टराइजेशन हमें कराने होते हैं, राइट। जैसे NMR हो गया, मतलब स्पेसिफिक है, इसके लिए हमें इधर उधर मतलब मोस्टली पेड होते हैं, अगर हमारे इंस्टीट्यूट में तो भी, आउटसाइड में तो भी, और थोड़ा कॉस्टली होते हैं जैसे रिसर्च स्कॉलर के लिए। तो ऐसा इसमें कुछ हो जैसे कि हम उसका एक कैजुअल सा हमें डेटा मिल जाए? बताइए आप क्या चाहते हैं आप? जैसे सपोज एक छोटा सा मॉलिक्यूल, 2 अमीनो
क्या आपका वो है टू डैश अमीनो अमीनो क्यूनोलिन क्यू यू आई QUI OLIN क्यूनोलिन LINE डैश क्रीम 3 डैश कार्बोनाइट्रेट राइट अब इसका हमें जैसे स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना है, जैसे हमने नेम तो हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट देयर of स्पेसिफिक स्ट्रक्चर of it in image format इमेज में चाहिए ना आपको स्ट्रक्चर इमेज नहीं चाहिए फाइंड द स्ट्रक्चर आई हैव ट्राइड फॉर इट बट ये एक अजीब सा स्ट्रक्चर दे देता है, ओके मॉडल टाइप दे देता है। राइट मतलब आपको अगर इमेज फॉर्मेट में चाहिए तो इमेज फॉर्मेट में शायद ज़्यादा है ना जी। कुछ इस तरह का है, ठीक है। केमिकल डायग्राम सर अगर आप जानते हो वो केमड्रॉ जैसे होता है, तो उस तरह का स्ट्रक्चर अगर इससे AI के थ्रू हमें मिल जाए तो वैसे अगर मैं उसके लिए बोलूँ तो आपको मैं परप्लेक्सिटी यूज़ करता हूँ। कुछ इस शेप से चाहिए आपको, ठीक है। तो परप्लेक्सिटी जो है आपको थोड़ा लाइव ट्रेंड्स और साइटेशंस के साथ आपको रेस्पॉन्स दे देगा, ठीक है। तो आने वाले टाइम में अगर मैं बात करूँ आफ्टर डाउन द लाइन 1 ईयर 2 ईयर जेमिनाई जो है आपका गूगल का, एज पर द रिसर्च जो मैं मेरा US में फ्रेंड्स का भी डिस्कशन होता है कि आने वाले टाइम में गूगल जेमिनाई विल बी द बेस्ट हिट, जो कि आपको बैकग्राउंड में इसमें क्या होता है टोकन्स यूज़ होते हैं, तो सबसे ज़्यादा टोकन्स फ्री ऑफ कॉस्ट टू प्रोवाइड करता है और सबसे ज़्यादा रिसर्च करता है, डीप रिसर्च, और फिर आपको रेस्पॉन्स देता है, ठीक है। सो बट अभी मैं आज की डेट में बात करूँ रिसर्च वर्क से रिलेटेड आपको या एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपको कंटेंट्स की नीड है तो आप बेस्ट है परप्लेक्सिटी को यूज़ कर सकते हैं, राइट। एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चन, कोई डाउट है किसी को? नहीं, कोई आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम जो जिसमें आपको बहुत टाइम लगता है और जो है यू आर नॉट गेटिंग द रिस्पॉन्स। अभी सर आपको एक gamma.app शो करके दिखा रहे थे, ठीक है। सो gamma.app, राइट। सो दिस इज अबाउट दी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। हमने थोड़ा डिस्कस किया क्योंकि सर ने ऑलरेडी आपको डिफरेंट चैटबॉट्स के बारे में बता दिया है, तो हमने थोड़ा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर फोकस करके रेस्पॉन्स जनरेट किया। अब आपको डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा आई नो इन द कॉलेजेस बहुत सारी PPTs बनानी होती हैं, तो सर ने gamma.app का एग्जांपल दिया था। तो gamma.app से आपके पास में क्या है 400 क्रेडिट्स इन अ मंथ आपको फ्री मिलते हैं, ठीक है। एक स्लाइड बनाने के लिए अराउंड 4 क्रेडिट्स आपके यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अगर आप और मैक्सिमम वन टाइम में आप 10 स्लाइड्स की PPTs के अंदर बना सकते हैं, ठीक है। जस्ट आपको गूगल में जाके आप gamma.app सर्च कर लो या डायरेक्ट gamma.app ओपन कर लो, तो उसके अंदर आप जो है PPTs को बना सकते हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग मी? आर यू देयर?
आर यू देयर एवरीवन? राइट, ठीक है. सो gamma.app, वी आर टॉकिंग अबाउट gamma.app. आपको अगर आप कोई भी मतलब बहुत यूज़र फ्रेंडली टूल्स हैं, अगर कोई भी इस वेबसाइट के ऊपर आएगा तो सबसे हाईलाइटेड जो आपके पास आइकन है टॉप में ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है हमने. नथिंग स्पेशल, क्रिएट न्यू AI. ठीक है. इसके अंदर अगर आपके पास पहले से कंटेंट है, अगर आपको 20 स्लाइड्स की नीड है तो आप क्या कर सकते हो, पहले चैट GPT से, जैसे सर ने स्लाइड्स बनवाई थी, स्लाइड्स बनवा लो 20, पहले 10 पेस्ट करो, एक PPT बनाओ, उसी कंस्टेंट्स को देते हुए फिर दूसरी स्लाइड बना लो 10 PPTs कर, फिर दोनों को मर्ज कर दो. राइट. सो थोड़ा सा मैं डीप डाइव कर रहा हूँ. सर ने gamma.app आपको ऑलरेडी एक बेस दे दिया है, बस उसके ऊपर थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा डिस्कस कर रहे हैं. राइट. बस इसको मैं इसी ऐप को फिर कंक्लूड कर देते हैं कि सर ने कंस्टेंट दिया है 4 PM वी हैव टू कंक्लूड. राइट. तो ऑलरेडी वी आर 4 से ऊपर निकल गए हम लोग. तो सबसे पहले हमने क्या किया था, gamma.app ओपन किया, हमें ये वाला बटन थोड़ा फैंसी सा लग रहा है, बस इस पर क्लिक कर दिया हमने. ठीक है. हमने इसके ऊपर सबसे फर्स्ट बटन हमारे पास जो आ रहा है जनरेट, हमने जनरेट पे क्लिक किया. यहाँ पे हमारे पास एक सर्च बार है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, प्रॉम्प्ट लिखेंगे अपना. ठीक है. क्या चाहते हैं हम लोग, तो बताइए क्या चाहते हैं. PPT बनवाना चाहते हैं किस टॉपिक पे, व्हाट इज AI. ठीक है. राइट. कोई दूसरा बताइए. नहीं बताइए प्लीज़. कौन सी लेटेस्ट PPT आपने कोई बनाई होगी आप लोगों ने, पब्लिक हेल्थ के ऊपर. राइट. आई एम अ प्रोफेसर इन सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ. मैम योर गुड नेम इज? डॉक्टर रीना मिश्रा. विश्नोई. विश या बिश, बी फॉर बॉम्बे. राइट. बिश्नोई. डॉक्टर रीना बिश्नोई, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ PPT ऑफ 10 स्लाइड. से ज़्यादा दोगे तो आपका वो बनाएगा ही नहीं, आपको बोलेगा पेड एडिशन पे चले जाओ. आई वॉन्ट टू क्रिएट अ PPT ऑफ 10 स्लाइड्स ऑन टॉपिक इज पब्लिक लॉज. ठीक है. इन इंडिया. ठीक है. क्रिएट अ PPT with pointers and sub pointers. use some funny anomalies आप यूज़ करना चाहते हैं या यूज़ आप कोई फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं, फॉर्मल. ठीक है. सबसे पहले हमने क्रिएट PPT, gamma.app ओपन किया, क्रिएट PPT पे क्लिक किया. उसके बाद हमारे पास 3-4 ऑप्शंस आए. आप वहाँ से किसी अपने वर्ड फाइल को अपलोड भी कर सकते हो या डायरेक्टली AI के थ्रू जनरेट कर सकते हो. तो हमने पहला ऑप्शन लिया, AI के थ्रू हमें जनरेट करना है. वी आर राइटिंग इट जनरेट आउटलाइन. पहले हम आउटलाइन जनरेट कर रहे हैं. ठीक है. तो ये आउटलाइंस आपकी जनरेट हो रही हैं. यहीं पे अगर आपको कोई एडिटिंग करनी है, आप एडिटिंग भी यहीं पे कर सकते हो. एडिटिंग होने के बाद फिर आप PPT जनरेट कर सकते हो. तो सर ने आपको ये स्लाइड्स बना के दिखाई थी. अब इसके आगे हम लोग चलते हैं. राइट. बताइए, जो आप पढ़ाते हैं वैसे ही कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं, है ना. राइट. ठीक है. अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, यू कैन चेंज हेयर ओनली. यू वांट टू रीजनरेट इट, यहाँ पे आप दोबारा से कंटेंट को, अपने प्रॉम्प्ट को बेटर करते जाएंगे, आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते जाएंगे. मोर फोकस प्रॉम्प्ट होगा, मोर बेटर रेस्पॉन्सेज विल बी. ठीक है. ये आप, सॉरी, एडिट बस आप डायरेक्टली कहीं पे भी जाके क्लिक कर दो. अगर आपको एडिट करना है, आप यहाँ से इंडिया की जगह आप US के लिए बनाना चाहते हो, जो भी टॉपिक आपको, जिस भी स्लाइड पे आपको चेंज करना है, आप वो चेंज कर सकते हो. अगर आपको दोबारा से पूरा का पूरा ये पूरा आउटलाइन ही चेंज करना है, तो यहाँ पे जहाँ पे आपने प्रॉम्प्ट दिया था, प्रॉम्प्ट नया मेंशन करके यहाँ पे दोबारा से आप रीजनरेट आउटलाइन पे क्लिक कर सकते हैं. डन है. राइट. चलिए. तो यहाँ पे नीचे एक बटन आ रहा है जनरेट का. दिस इज द पावर ऑफ gamma.app. आपने जनरेट पे क्लिक किया और आपके पास एक ब्यूटीफुल PPT बन के रेडी हो जाएगी. इसमें कुछ आप नीचे है ऑप्शंस, आप बैकग्राउंड कैसा सेट करना चाहते हैं, फोरग्राउंड कैसा देना चाहते हैं, कलर्स कैसे होने चाहिए, इमेजेस आपकी किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, सब आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. मैंने एज सिंपल एज पॉसिबल बताने की कोशिश की है. बस प्रॉम्प्ट बनाया, प्रॉम्प्ट दिया,
आउटलाइन जनरेट किया और जनरेट पे क्लिक कर दिया, हमारी पीपीटी रेडी हो जाएगी। और इस काम को करने के लिए आई कुड सी, पहले मैं खुद पीपीटी बनाता था, 1 वीक का टाइम लगता था, फॉर्मेटिंग करने में बहुत टाइम लगता था हमारे पास, ठीक है। और हम वी वर नॉट दैट मच प्रोफेशनल इनटू पावर पॉइंट, तो हमें कई सारे ऑप्शन ढूंढने पड़ते थे। एक बार बनाते थे, फिर 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स के बाद भूल जाते थे, फिर दोबारा डेवलप करते थे, तो फिर जो है दोबारा से मेहनत लगानी पड़ती थी। बट यहाँ पे क्या है, आपके पास आप जो है ऑटोमेटिकली सारा स्ट्रक्चर, बुलेट पॉइंट्स, आपके पैराग्राफ सब बहुत ही ब्यूटीफुल लुक एंड फील के अंदर आपके पास रेडी हो जाएगा, ठीक है। हम ऊपर जाते हैं, हमारे पास पीपीटी रेडी है। यहाँ पे जो इमेजेस आ रही हैं वो एआई जनरेटेड है। आप सुभारती यूनिवर्सिटी का लोगो देना चाहते हैं दे सकते हैं, तो वहीं पे प्रॉम्प्ट में भी मेंशन कर सकते हैं कि सुभारती यूनिवर्सिटी का लोगो यूज़ कर लो, राइट, ठीक है। तो पब्लिक हेल्थ लॉज इन इंडिया, डॉक्टर रीना बिश्नोई, प्रोफेसर, सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ, दिस इज द पीपीटी। प्रेजेंट करना चाहते हैं प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे राइट में 3 डॉट्स हैं, डॉट्स में एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, ठीक है। एक्सपोर्ट पे जाएंगे, किस फॉर्मेट में चाहिए, पीडीएफ में, पावर पॉइंट में, आपको पावर पॉइंट में नीड है, आपने क्लिक किया, ये पावर पॉइंट आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। पीपीटी जनरेट करने के बाद भी एडिट करना है, बाद में भी आप एडिट कर सकते हैं। कोई स्लाइड मॉडिफाई करनी है वहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। यस प्लीज। कॉपीराइट जी जी कॉपीराइट आप कर सकते हो, ऐसा मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है अभी तक एज पर दी पॉलिसीज़। और मतलब इवन मैंने तो देखा है, मेरा सन डीपीएस में पढ़ता है ग्रेटोना में, आई कुड सी जो बुक्स आ रही हैं अब उसमें अंदर एआई बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है कंटेंट्स के अंदर। यस या यस बना सकते हैं, आप भी बना रहे हैं, वो भी बना रहे हैं। एक डिस्क्लेमर डाल सकते हैं मैडम नीचे की, सम ऑफ द कंटेंट इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ द एआई। ओके, एक डिस्क्लेमर हम वहां पे डाल सकते हैं। हाँ, वो तो आप कभी भी डाल सकते हैं। और इसमें मैंने बताया परप्लेक्सिटी अगर आप यूज़ करें तो वहाँ साइटेशंस है, तो आपके पास हर टॉपिक के साथ उसमें वेबसाइट का यूआरएल दिया हुआ है, क्लिक करोगे आपको मिल जाएगा कौन सी वेबसाइट से आपने कंटेंट लिया है, ठीक है। तो आप वो वेबसाइट यूआरएल्स मेंशन कर सकते हैं परप्लेक्सिटी में, राइट। तो ये हमारे पास पीपीटी रेडी हो गई, इनेबल एडिटिंग, ठीक है, पब्लिक हेल्थ लॉज इन इंडिया। और आप देखोगे अब ये सारा आपको इस फॉर्मेटिंग को करने में नीचे ये स्पेशल आइकन्स लाने के लिए आपको बहुत सोचना पड़ेगा, ठीक है। और जो लुक एंड फील है आपका यहाँ पे थोड़ा लाइट पिंक कलर है, आप कलर्स को मॉडिफाई करना चाहते हैं, आप इमेजेस को मॉडिफाई करना चाहते हैं, वो इमेजेस आपके पास एक फॉर्मेट की आ रही हैं, आप लाइव इमेजेस ऐड करना चाहते हैं, एआई जनरेटेड इमेज ऐड करना चाहते हैं, आर्ट वर्क में खाली आउटलाइन वाली इमेजेस होती हैं, तो उस टाइप की इमेजेस आप सेलेक्ट करके उस टाइप की इमेजेस ऐड कर सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको डेवलप करके दे देगा ये, ठीक है। अब इसमें एक कंस्टेंट जो आपको लग सकता है, ठीक है, लीगल प्रोविजंस फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी। एक जो आपको चैलेंज यहाँ पे लग सकता है कि नीचे इसमें आपके पास मेंशन्ड है मेड विद गामा, मेड विद गामा दिख रहा होगा शायद आपको, ठीक है, राइट बॉटम कॉर्नर में लिखा है मेड विद गामा, ठीक है। अब जो माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट है उसमें कोई लॉक करने का फीचर नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इसको मेड विद गामा को भी हटाना चाहते हैं तो आपको आइडिया होगा, व्यू में जाइए, यहाँ पे मास्टर स्लाइड का ऑप्शन है, या तो एक एक उसमें जाके, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, आप इसको क्लिक कर रहे हो तो क्लिक नहीं हो रहा है, मेड विद गामा यहाँ से डिलीट नहीं हो पा रहा, बट आप व्यू में जाके मास्टर स्लाइड आपने यूज़ किया होगा डेफिनेटली, स्लाइड मास्टर, ठीक है। स्लाइड मास्टर में क्या होता है कि अगर आप मास्टर स्लाइड में कुछ मेंशन कर देते हो तो हर एक स्लाइड के अंदर वो आ जाता है, पर गामा ने मास्टर स्लाइड में मेंशन नहीं किया, हर एक स्लाइड के अंदर जाके मेंशन किया है। तो आपको एक एक स्लाइड पे 10 स्लाइड्स हैं आपके पास, इट टेक लेस देन 1 मिनट। आपने स्लाइड सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपने नीचे मेड विद गामा लिखा है, इसको बस आपने डिलीट कर देना है हर एक स्लाइड के ऊपर जाके, ठीक है। तो आपके पास हर एक स्लाइड से ही डिलीट हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग की 3 स्लाइड से डिलीट किया है, क्लोज मास्टर व्यू किया और आपके पास स्टार्टिंग की 3 स्लाइड से आपके पास वो डिलीट हो गया। अब राइट बॉटम में आपके पास मेड विद गामा लिखा हुआ नहीं आ रहा है। आर यू गेटिंग दिस, ठीक है। सो मतलब अभी टाइम जितना था हमारे पास, हमने केवल 2 ही टॉपिक मेजरली कवर किए हैं। एक हमने कैसे बेटर प्रॉम्प्ट देना है और कैसे हमने gamma.app को यूज़ करना है। रेफरेंस हैंड रिटन मॉड्यूल्स हमें दे दो, टिपिकल प्रॉम्प्ट यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन। वैसे सर ने बहुत अच्छे प्रॉम्प्ट्स बनाए हैं। आप जैसे आप तो एक्सपीरियंस हो गया प्रॉम्प्ट करते क्या डालना क्या है। जी जी, हमें 50 पेज का बुक दे दीजिए। डन है सर, मैं हम भी उसको लेके हम एक्सपीरियंस लेंगे। यस मतलब मैं आपको दे दूंगा, बट बेटर क्या है, ठीक है,
आप चैट जीपीटी से ही पूछ सकते हैं। नहीं वो तो बात तो कैसे पहले आपका नहीं मतलब आप एग्जाम्पल्स लिखोगे उसको डालेंगे तो वो दे देगा जो ये भी वही देगा। मैं भी वही दूंगा। ये इनका एक्सपीरियंस है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मैं उसको डेफिनेटली रिफाइन करूंगा। टिपिकल वाले जो आपने यूज किए हैं राइट तो राइट हम भी यूज करके एक बार आप जैसे मास्टर बन जाए। डन 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 ठीक है ठीक है सर। तो मैं आप सर को भेज दूंगा, मनोज सर को, या ठीक है तो सर आपको फिर आगे सर्कुलेट कर देंगे। राइट डन, थैंक यू। Thank you so much, sir, for your insights. Our officers must have surely benefited from this training and enjoyed it a lot. With this, we formally conclude today's program. Thank you all for your valuable presence and cooperation. Have a great day ahead. Jai Hind.